So in the last lecture, we have started with proteins. Yeah, proteins are nothing but they are polymers of alpha amino acids. Alpha amino acids matlab on the same carbon you are having a COOH group and an NH2 group, amine group along with carboxylic acid. All the naturally occurring amino acids are of L form. L form matlab wo jo NH2 hai, it is on the left hand side. If it is present on the right hand side, it will be called as D form. Again, L and D forms are mirror images of each other, or they are enantiomers. Only one amino acid is achiral, which is glycine. If this R becomes hydrogen, it is called as glycine. Only that amino acid is achiral. Rest all other amino acids are chiral. This R is called as the residual part. If R changes, the type of the amino acid will change. Depending upon R, in general, any amino acid will have amine group as well as COH group. If the number of NH2 groups are equal to the number of COH groups, then the amino acid is treated as neutral. If in the R you have greater number of NH2 groups, then it will be basic. If you have greater number of COH groups, it will be acidic. Or else total molecule ke andar, if number of NH2 groups are greater than number of COH groups, it will be basic. If the number of COH groups are greater than NH2 group, it will be acidic. Okay. So all the amino acids, further they are classified as essential as well as non-essential. Essential amino acids matlab those amino acids cannot be synthesized within the living systems. They have to be taken through external source. Diet के साथ लेना पड़ेगा. Non-essential amino acids matlab they can be synthesized within the living system, within our body. So no need to take through diet. Okay. So आपको NCERT में एक table given है. They have given you 20 amino acids. उनमें से स्टार मार्क किया गया which are essential and which are non essential. मैं आपको इसी नोट्स में लास्ट में भी आपको दिया है. Okay. All the star marked ones are essential amino acids. एक बार देखो कितना essential है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. You have 10 essential amino acids. Okay. Please try to remember these things. Which amino acid comes under essential and which amino acid comes under non-essential. Essential सारे essential याद रख लेना. जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये. ओके ठीक है. उसके बाद हमने ये भी डिस्कशन किया इफ यू आर हैविंग एन अमीनो एसिड it can exist as Zwitter ion. Zwitter ion matlab in the same species you will be having a positive charge and negative charge. So if you try to do electrolysis of a Zwitter ion, it will neither migrate towards the cathode nor migrate towards the anode because overall molecule is neutral. Okay, so if you are placing the Zwitter ion in acidic medium, it will exist as cation form. If you are placing the Zwitter ion in a basic medium, it will exist as an anionic form. Okay, acidic and basic medium मतलब क्या है Zwitter ion के respect में? If the pH is pK1 plus pK2 upon 2, it is called as isoelectric point. उस isoelectric point पे you will have existence of Zwitter ion. इस P ये जो particular isoelectric point का pH है, इससे कम pH रहा तो it is considered as acidic. You will be having most of the form as cationic form. इससे ज़्यादा pH रहा, इस isoelectric point से ज़्यादा pH रहा तो it is considered as basic for this particular amino acid. Then it will exist as anionic form. Okay, so आपको direct question आता है, they will give you K1. K1 is the acid dissociation constant of this species. K2 is the acid dissociation constant of this species converting into this. They will give you K1 and K2. K1 के केस में COH dissociate हो रहा है, K2 के केस में NH3 positive dissociate हो रहा है. They will ask you what is the isoelectric point. Simply you need to calculate pK1 plus pK2 divided by 2. Okay, this is the
pH for amphiprotic ion. Amphiprotic ion matlab one which can accept one H positive, one which can donate one H positive. Okay. Structure of the proteins, the linkage which you have between two amino acids is the amide linkage, which is also called as peptide linkage. In general, we will show the N terminal on the left hand side and C terminal on the right hand side. This is called as the N end or N terminal. This is called as C terminal or C end. Okay. And they are arranged in trans configuration. So residual parts they are opposite to each other in order to maximize the stability. इनके बीच में repulsive forces कम करने के लिए, steric hindrance कम होने के लिए, they are placed trans to each other. So the configuration we have is trans configuration. About the peptide linkage, we have trans configuration. Okay. Now let us analyze the structure of proteins. Everyone in the lecture? sir. Okay. ठीक है. ये जो proteins है, they basically have 4 different levels of structures. The first structure is called the primary structure, followed by secondary structure, then tertiary structure and quaternary structure. As you go from primary to secondary to tertiary to quaternary, the complexity of the structure becomes more and more. मतलब primary structure से ज़्यादा complex secondary structure होगा, secondary से ज़्यादा complex tertiary होगा, tertiary से ज़्यादा complex quaternary होगा. Okay, so ये सारे structures क्या क्या indicate करता है, कैसे रहता है, let us understand. In the primary structure tells us about the coding in the protein. मतलब which amino acid is linked to what. Okay, primary structure describes the sequence of the amino acids connected together to form a polypeptide. It may contain more than one chain. If this is the example for insulin, the primary structure for insulin, it is made up of 2 chains. One chain has 21 amino acids and the other chain has 30 amino acids. ये जो coding रहता है ना, this coding is called as the primary structure, which is attached, which amino acid is attached to or linked to which amino acid. Okay, कोई भी इंसुलिन में कोडिंग यही रहेगा. बीच में ऐसा कुछ दिखा है ना, these are called as disulfide linkages. Already हमने देखा है cysteine जो है, it has a thiol group. इधर है, yeah, cysteine has SH group, thiol group. Disulfide linkages मतलब 2 cysteines के बीच में you will be having a disulfide. Disulfide मतलब इसका SH इसका SH से H2 हटा दो, H2 हटा के S और S के बॉन्ड बीच में बॉन्ड करो. That is called as disulfide linkage. Similarly, 2 chains के बीच में भी there are disulfide linkages. Hence these 2 chains are together. इस cysteine, केवल cysteine के बीच में ही आपको disulfide linkage बन सकता है. Because only cysteine has the thiol group. Okay. So these 2 chains are together because of the disulfide linkages. You can have disulfide linkage within the chain as well as across the chain. ये इसका N terminal है, इस chain का C terminal ये है, इस chain का N terminal ये है, C terminal ये है. Clear है? If you are having 21 amino acids in chain A, the number of water molecules required for hydrolysis are 20. इसके अंदर इसको hydrolysis करने के लिए require 29 water molecules. Okay? So primary structure क्या कहता है? Or it gives us information about the sequence or about the coding. Okay. Secondary structure क्या करेगा? Secondary structure tells us the shape in which these amino acids are present. Secondary structure describes the shape in which the polypeptide can exist. Basically, secondary structure can have 2 different shapes. One is alpha helix and the other is beta pleated sheets. अल्फा हेलिक्स का मतलब आप लोग को पता होगा, हेलिक्स मतलब क्या होता है. दिस इज हेलिक्स. ओके, एंड दिस इज राइट हैंडेड स्क्रू स्ट्रक्चर. मतलब ये जो हेलिक्स है वैसा भी रह सकता था. ओके, देन दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंडेड स्क्रू. दिस इज राइट हैंडेड स्क्रू. मतलब एक स्क्रू को
if you are rotating the screw in clockwise sense, okay, from right to left, you will get this structure, right? समझ में आया ये? This is called as right-handed screw structure. Left-handed screw मतलब if you are rotating the screw in anti-clockwise sense, आपको ऐसा कुछ मिलेगा. यहाँ से start होके ये ऐसा आएगा. ओके, ठीक है. ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स, ये कैसे डिटरमाइन होता है? In the amino acids you are having different groups or residual parts different रहा तो the amino acid will be different. In order to have maximum space, if that R is bulky, वो R के बीच में space ज़्यादा होने के लिए, or else if the R is having some groups which can have hydrogen bond. Okay, so the amino acid, the polypeptide chain will be rotated in this direction in order to maximize the hydrogen bonds among the different residual parts. Okay, so ऐसा straight chain जैसा रहता तो there cannot be hydrogen bonds. So it rotates in this manner in a helical structure in order to have maximum number of hydrogen bonds within among the residual parts. Similarly, beta pleated sheets be either you can have alpha helix. Beta pleated sheets मतलब क्या है? ये देखो, एक शेड जैसा है ना, ऐसा अल्टरनेट है, ऐसा कुछ शेड जैसा है. इसके ऊपर अमीनो एसिड्स दे विल बी ओरिएंटेड एंड इनके बीच में अगेन यू विल बी हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, सो बीटा प्लीटेड शीट होगा या अल्फा हेलिक्स होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द रेसिडुअल पार्ट. In order to maximize stability by hydrogen bonds as well as keeping the R far from each other, steric hindrance कम करने के लिए. Okay, ये NCERT टेक्स्ट बुक में गिवन है. देखो, मैं ये जो ड्रॉ किया ना, ये वाला पार्ट है. Okay, this part is this and इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ये. ओके, कुछ शीट्स जैसा रहेगा और शीट के ऊपर ये ओरिएंट होगा. Is this clear? ओके, ये अल्फा हेलिक्स तो इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं आप लोग. बीटा प्लीटेड शीट्स थोड़ा कोशिश करो विजुअलाइज करने के लिए. ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है, दे अराइज ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन. दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज बैकबोन, द पॉलीपेप्टाइड थिंग, due to folding of the backbone of the polypeptide chain because of hydrogen bonds. In alpha helix, all possible hydrogen bonds are formed to give a right-handed screw configuration. This is right-handed screw configuration. Okay. In beta pleated sheets, the peptide chains are stretched out to maximum extension and joined by intermolecular hydrogen bonds. Okay. क्लियर है? सो ओवरऑल आपको ऐसा कुछ दिख सकता है. दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. यू विल हैव मिक्सचर ऑफ अल्फा हेलिक्स. इसके अंदर ये हेलिकल स्ट्रक्चर में यू आर हैविंग दोस अमीनो एसिड्स, और यू कैन हैव बीटा प्लीटेड शीट्स. दीज आर बीटा प्लीटेड शीट्स. ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कैन बी प्रेजेंट विद इन द सेम पॉलीपेप्टाइड. ओके, so this is the secondary structure of the protein. Okay, tertiary structure में क्या होता है? Several beta pleated sheets and alpha helix coil. Okay, they coil among themselves to form a tertiary structure. समझाता हूँ. The tertiary structure describes the overall folding of a polypeptide chain, that is further folding of the secondary structure. And it can also have two major shapes: fibrous proteins, globular proteins. The folding of the proteins takes place by disulfide linkages again. देखो, ये देखो. This is further folding of the secondary structure. मतलब इसके अंदर, इनके अंदर you will have either alpha helix or beta pleated sheets. Okay, ऐसा randomly fold हुआ है. Folding कैसे होता है? Folding will be done with the help of disulfide linkages. ये जो particular tertiary structure है, this is the tertiary structure of
hemoglobin, 4 of these structures, quaternary structure में क्या होता है, several tertiary structures will orient in space to form a quaternary structure. In the hemoglobin, 4 tertiary structures orient themselves in space to form a quaternary structure. मतलब क्या है इधर देखो, this is the primary structure which simply tells us which amino acid is joined to another amino acid with a peptide link. Okay, in the secondary structure you will have either alpha helix or you can have beta pleated sheets. In the tertiary structure, you will have further folding, यही इधर ड्रॉ किया मैंने, you will have further folding with the help of disulfide linkages. ये जो linkages बीच में दिखा रहा हूँ ना, these are disulfide linkages, मतलब सल्फर सल्फर के बीच में, मतलब सिस्टीन अमीनो एसिड के बीच में there will be disulfide linkage. Okay, so several tertiary structures, इधर देखो 4 यूनिट्स है, इधर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है. These 4 units orient in space in order to form a quaternary structure. So hemoglobin जो है, it is made up of 4 tertiary structures. समझ में आया? सर वो मतलब कौन से भी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है या फिर सिर्फ क्वाटरनरी में करेगा? Sorry, कोई भी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है या सिर्फ क्वाटरनरी में करेगा? मतलब मतलब वो चारों फॉर्म्स ऐसे दिखेंगे ना या फिर? चारों फॉर्म्स ऐसे दिखेंगे. Group of tertiary structures will become a quaternary structure. ऐसा 3 4 5 some n number of tertiary structures orient in space in order to maximize the intermolecular forces. वो जो intermolecular forces जो भी रहेगा, they can be an ionic force. Ionic force कैसे मिलेगा? You are having a amino acid in zwitterion form ना, you are having NH3 positive and CO minus. So यहाँ पे NH3 positive CO minus उन दोनों के बीच में ionic force जैसा बनेगा, इसका CO minus, इसका N terminal. Okay, or you can have van der Waals forces. इसका residual part में if you are having a larger carbon chain, इसका carbon chain, इन दोनों के बीच में van der Waals forces मिल सकता है. or you can have a disulfide linkage too, एक disulfide linkage भी हो सकता है. So all these intermolecular forces are responsible for tertiary structures to come together. Okay, ये tertiary structure पास में क्यों रहेंगे? Because of some interactions. हीमोग्लोबिन के केस में 4 स्ट्रक्चर्स रहेगा, 4 टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हीमोग्लोबिन प्रोटीन में, कोई और में और भी ज्यादा रह सकता है. ओके सर बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स में, इनमें क्या है, यू विल बी हैविंग either अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट. ये पूरा ये जो है ना वॉर्म जैसा जो भी है, इसके अंदर यू कैन हैव the amino acid chain either as an alpha helix or a beta pleated sheet. Yeah, Rujita, tell me. सर मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में से मतलब 4 मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने वाले ऐसे बॉन्ड्स नहीं होते क्या? मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर में जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड जैसे डाइसल्फाइड लिंकेज है, ऐसा इनके बीच में देख कुछ बॉन्ड जैसा नहीं है, मतलब डाइसल्फाइड लिंकेज नहीं है, बट यू कैन हैव van der Waals forces आयनिक इंटरेक्शंस, ये रह सकता है. ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यू कैन हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू. ओके सर. ओके, एक लंप है, ये एक लंप है, ये एक लंप है, ये एक लंप है. अभी ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, दिस इज द ग्लोबुलर फॉर्म ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर. मतलब ऐसा रैंडम फोल्डिंग है ना, एक लंप जैसा है, बल्क जैसा है. यू कैन हैव टर्शियरी स्ट्रक्चर, पहले लिखा ना, ऑफ 2 टाइप्स, फाइब्रस एज वेल एज ग्लोबुलर. ये जो हमने ड्रॉ करके इधर ड्रॉ करके शो किया, दैट इज ग्लोबुलर. ओके, यू कैन हैव अ फाइब्रस फॉर्म टू, ऐसा फाइबर्स जैसा. ओके, which is usually present in hair. Keratin is a fibrous form. In globular proteins, the chains of polypeptides coil around to give a spherical shape. They are soluble in water in general. Okay, globular proteins are water soluble.
एग्जाम्पल इंसुलिन, एल्बुमिन एंड हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन ये वाला अभी इधर जो शो किया ना, ये हीमोग्लोबिन मान लेते हैं. दिस इज हीमोग्लोबिन. ओके, कहाँ पे लिखा? हाँ. In globular proteins, the chains of the polypeptides coil around to give a spherical shape. They are water soluble. Example insulin, albumin, hemoglobin. आपको exam point of view से इतना ही याद रखना है. They will give question as which of the following is a globular protein. ये options दिखेगा आपको, यही हमारे पास NCERT टेक्स्ट बुक में है. केवल यही options दिखेगा आपको, डायरेक्ट वो देख के मार्क करना है. Which of the following is a fibrous protein? ये 3 दिखेगा और इसमें मायोसिन दिखेगा. मायोसिन आपको टिक करना है. Fibrous proteins, chains run parallel and are held together by hydrogen bonds. These chains are running parallel and they are held together by hydrogen bonds. In chains के अंदर क्या रहेगा फिर से? You will be having either alpha helix or beta pleated sheets. Okay? And they are also linked by disulfide linkages. They have fiber-like structure and they are in general insoluble in water. Okay? ये भी पूछ सकते हैं which of the following are water soluble. Fibrous are insoluble, globular are soluble. Example, keratin, myosin. Myosin is present in muscles. Keratin is part of silk or wool or hair. Is this clear? Quaternary structure में क्या हुआ? Some proteins are composed of 2 or more polypeptide chains called subunits, and the spatial arrangement of these units with respect to each other will give you the quaternary structure. Clear? Is this clear? हाँ सर. जस्ट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए प्रोटीन्स के बारे में. दे विल नॉट गो इन डिटेल, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना हम. दे विल नॉट गो इन डिटेल अबाउट दीज स्ट्रक्चर्स. जस्ट आइडिया होना चाहिए हमको, कितने स्ट्रक्चर्स होता है, कितने लेवल्स होता है. 4 लेवल्स बस. इज दिस क्लियर? ओके. आपको अपने बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आ सकता है which is called as denaturation of proteins. They will ask what is meant by denaturation of proteins. Important question है. You may get objective question 2 in JEE mains or NEET. Denaturation of proteins का मतलब क्या है? Proteins found in biological systems. Proteins found in biological systems with a unique 3-dimensional structure. मतलब ये final structure. With a unique 3-dimensional structure and biological activity. Different proteins will have some definite activities. Okay, they are designed to do something, और उनका use कुछ तो रहेगा, and they are called as native proteins. They are called as native proteins. When a native protein is subjected to a physical change, the physical change can be a temperature change and a chemical change, which can be a change in pH. Okay, whenever the native proteins are subjected to change in pH or change in temperature, होता क्या है? The hydrogen bonds are disturbed. In the alpha helix as well as beta pleated sheets, there are hydrogen bonds, right? 2-3 tertiary structures के बीच में भी there are hydrogen bonds. Okay, the hydrogen bonds are disturbed. Due to this, the globules मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन को रेफर करते हुए, the globules unfold. वो जो coil structure है ना, ये जो foldings है, these foldings will be unfolded. They unfold and the helix get uncoiled. वो जो alpha helix है, they will get uncoiled and the protein loses its biological activity. मतलब क्या हो रहा है? The tertiary structure and the secondary structure. The tertiary and the secondary structure. Quaternary structure is nothing but group of tertiary structures, ना? So जो tertiary and quaternary and secondary structures जो भी है, they are getting affected. The tertiary and the secondary structures are destroyed. वैसा बोल सकते हैं. Okay, because of which the biological activity of the protein is lost. उसका जो भी significance है उस protein का, उसका काम, it is no longer able to do its task. That particular process is called as denaturation of proteins.
which happens with change in temperature and change in pH. In the denaturation of proteins, you are affecting the secondary and the tertiary structures. 1 degree structure stays intact. मतलब जो amino acids के बीच में जो bonds है, all the peptide linkages will stay intact. The sequence will stay intact. The coding will remain. Okay, वो जो alpha helix, beta pleated sheets और वो overall folding जो है, further folding जो है, that will be destroyed. समझ में आया? I hope this is clear. Okay. Okay. आप लोग को टेबल यहीं पे दिया मैंने. प्लीज गो थ्रू दिस टेबल. मैं नोट्स पोस्ट करता हूँ. प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स. आप लोग को क्वेश्चंस में which of the following has an OH group? ऑप्शन में आपको सेराइन, बाकी सब ग्लूटामिक एसिड ये सब दिखेगा. Which of the following is an acidic amino acid? If you are having more COH units, then it will be acidic. If you are having more NH2 units, it will be basic. Okay, so ये acidic aspartic नाम में ही है. Glutamic acid, aspartic acid, और कुछ acidic वाला proline. Proline is not acidic because you are having जितना NH group से उतना COH है, so it is not acidic. Okay. ठीक है. Let's go to the next section, last section. यहाँ तक सबको clear है? हाँ. Okay. Last section, nucleic acids. Vitamins भी है. विटामिन्स आप लोग को टेक्स्ट बुक में पढ़ के किस विटामिन डेफिशिएंसी से क्या क्या डिसीजेस आएगा और वो विटामिन्स किस से मिल सकता है वो सब रहेगा. एक टेबल रहेगा. यू नीड टू गो थ्रू इट एंड यू नीड टू रिमेम्बर इट. यू विल डेफिनेटली गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट. इतने सारे सेशंस में स्लॉट्स में से कोई भी एक स्लॉट में वो आ सकता है. इनके अलावा और भी एक चीज रहता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल. तो वो भी आप लोग को देख के कौन वाटर सॉल्युबल है वो देखना पड़ेगा. ओके. कल पूछता हूं मैं आपको. ठीक है. लेट अस गो टू न्यूक्लिक एसिड्स. एनीवन हैव एनी आइडिया ऑन न्यूक्लिक एसिड? Bio students, what are nucleic acids? What are nucleic acids? DNA RNA के बारे में सुना कभी? What is RNA? RNA is ribose nucleic acid. So ये जो DNA RNA जो है, these are nothing but these are made up of nucleic acids. DNA जो है, it is deoxyribose nucleic acid. कोई भी nucleic acid है, it is primarily made up of 3 parts. 3 parts. Any nucleic acid have a pentose sugar. Pentose sugar मतलब a sugar which is made up of 5 carbons. Okay, a pentose sugar, and that pentose sugar we have is either you can have ribose, which is present in RNA. In DNA you have deoxyribose. We say it is 2-deoxyribose. इसका मतलब क्या है देखेंगे स्ट्रक्चर देखते समय. Either you can have a ribose or 2-deoxyribose. Then you have a nitrogen containing base. Nitrogen containing base, which is usually a heterocyclic compound.
Heterocyclic matlab you will be having a cyclic structure and all the atoms are not carbons. Some of the carbons are replaced by nitrogen. It is a heterocyclic nitrogen containing base. Then you have phosphoric acid derivative. What is phosphoric acid? Formula H3PO4. H3PO4 is phosphoric acid. Phosphoric acid derivative matlab you will be having a phosphate ester. ये होता क्या है देखते हैं. You have phosphate ester. Okay. Any nucleic acid has 3 parts. ये 3 parts को study किया तो we can understand the DNA and RNA. Okay. ये जो nucleic acids है these are responsible for heredity information, and heredity information is present inside genes. Genes ये biology students को ज़्यादा पता होगा. Genes which are part of chromosomes contains this information. In our cells in form of DNA and RNA. What is the full form of RNA? Ribose nucleic acid. acid. Ribose nucleic acid. मतलब the pentose sugar which is present in RNA is ribose. Along with it, you will be having some nitrogen containing bases. And there are some phosphoric acid derivatives. DNA is deoxyribose Ribose. nucleic acid. Okay. पहले ribose का structure draw करके, then we will see what are the bases which are present in nucleic acids. Then we will see phosphoric acid derivative क्या होता है, तीनों को club करेंगे. D-ribose. The ribose which we have is D-ribose. 5-membered है. So glucose में जो mark करते हैं हम, all the OH on the right hand side. In this case, all the OH are present on the right hand side. Easy है ribose, याद रखना. Okay. इसका hemiacetal form. Again, we need to make a 5-membered ring. Hemiacetal form मतलब इसके ऊपर जो lone pair है, if it goes and attacks on this carbon, the lone pair is attacking on this carbon. Whenever it is attacking on this carbon, इसके ऊपर जो hemiacetal form है OH बनेगा. It can be on the right hand side or it can be on the left hand side. अगर right hand side में रहा तो it will be called as alpha. Left hand alpha अंदर beta बाहर ना. Left hand side में रहा तो it will be called as beta. Direct draw कर दो मैं furan structure जैसा.
देखो 5 मेंबर रिंग ना, 1 2 3 4 5। इस स्ट्रक्चर में किसी को डाउट है तो बताओ। ये शो करके हम ड्रॉ कैसे करते हैं? इन 3 को ऊपर मार्क करेंगे और इसको भी ऊपर मार्क करेंगे। ये 3 ऊपर मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? बीटा। आई नीड टू ड्रॉ द बीटा फॉर्म। सो इन द न्यूक्लिक एसिड you will be having the beta forms. We are interested in beta D ribose, not alpha. बीटा बाहर ना, मतलब OH लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। So OH will be placed up, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, एंड फाइनल पे ऊपर CH2OH, नीचे हाइड्रोजन। क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर। बीटा फॉर्म ड्रॉ किया मैंने। किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो बताओ मुझे। ओके, जिस कार्बन के ऊपर जाके अटैक किया, दैट इज द फर्स्ट कार्बन ना। फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए OH ऊपर मार्क किया। दिस इज सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। ओके, the deoxyribose which we have is 2 deoxyribose. In DNA the deoxyribose we have is 2 deoxyribose. इसका मतलब क्या है? On the second carbon, remove the OH and convert this into hydrogen. You will get 2 deoxyribose. ये जो है उसको convert that into hydrogen. This is called as beta deoxyribose. This is part of RNA. This is part of DNA. और DNA के अंदर रहेगा, that is not DNA. The sugar which we will be having is beta deoxyribose. Beta 2 deoxyribose. Okay? हाँ। Okay. Let us see the bases present in the nucleic acid. Bases in nucleic acids. Anyone remembers this structure? What is the name of this structure? Anyone? पायराइल। This is purine. This is purine.
ओके, प्यूरिन से डिराइव्ड बेसिस जो है, प्यूरिन से डिराइव्ड बेसिस का मतलब, ये नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है, अगर इसके ऊपर NH2 रखा, this is called as adenine. Adenine. If you are placing, यहाँ पे निकाल के डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पे NH2. Okay, this is also derived from purine only. Purine जैसा ही कुछ दिख रहा है. This is called as guanine. Okay, adenine and guanine. What is the name of this base? Anyone? This is called as pyrimidine. Pyrimidine. इससे derived जो भी compounds है, NH2. You need to remember these structures, very important. This is called as cytosine. You need to remember them. थोड़ा मुश्किल है याद रखना, बट मेहनत करो, हो जाएगा. This is called as uracil, and this is called as thymine. Okay, so the nitrogen containing bases, ये नहीं रहेगा, प्यूरिन एंड pyrimidine नहीं रहेगा, इनसे derived है ये. Okay, you have adenine, guanine, cytosine, uracil and thymine. Okay, in DNA. In DNA, the bases which are present are adenine, guanine, cytosine and thymine. You don't have uracil in it. DNA के अंदर you have AGCT. RNA के अंदर you will have uracil, AGCU. You don't have thymine in RNA. AGCT and AGCU. Okay. Is this clear?
क्वेश्चन sir. लोग को which of the following is not present in DNA, they will be giving you the structures. डायरेक्ट ये नेम्स नहीं दिया जाएगा, they will be giving you the structures. So uracil का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, then only you can mark this is not present in DNA. Okay, ठीक है. So in any nucleic acid you have a pentose sugar, you have a nitrogen containing base which is heterocyclic, and then you have phosphoric acid derivative करके लिखा है ना. In nucleic acids, the phosphate group that is present is a phosphodiester. The group that is present is a diester form. मतलब क्या है, phosphoric acid क्या होता है, H3PO4 double bond low, OH OH OH, this is phosphoric acid. If you are replacing 2OH with OR and OR, एक ester हुआ, एक ester हुआ, this is called as phosphodiester. Okay, so these three parts together will form the nucleic acid. So nucleic acid exactly कैसे बनता है, let us understand that. उससे सर ये पहले दोनों में कॉमन होगा? ये तीनों रहेगा सब में. DNA RNA में RNA is made up of a beta D ribose sugar, the bases are AGCU. ये AGCU रहेंगे along with a phosphate diester. Exactly हो कैसे रहेगा दिखाता हूँ, 2 मिनट. न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड करके दो चीजें हैं. न्यूक्लियोसाइड इज नथिंग बट a base along with a sugar, nitrogen containing base along with sugar, it is called as nucleoside. मतलब you are not including the phosphate. Example, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ का जो OH है एंड यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH रहता है ना, OH और हाइड्रोजन दोनों निकल के H2O जैसे चला गया and you are forming a bond between these two. इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाया मैंने. You are having CH2OH, CH2OH. So parts there will be hydrogen, na? Hydrogen,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, ये जो कंपाउंड है दिस इज एडिनाइन, राइट? देखो एडिनाइन, एडिनाइन से जो भी न्यूक्लियोसाइड बना इट इज कॉल्ड एज एडिनोसाइन। Okay, similarly if you make ये हटा दो, you are making this as hydrogen। आपको सेपरेट नंबरिंग होगा, इसमें एक नंबरिंग होता है, इसमें एक नंबरिंग होता है। इसमें जो नंबरिंग करेंगे हम यूजुअली रिप्रेजेंट डैश, 1 डैश, क्योंकि वो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी जैसा हुआ 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, hence it is called as 2 dash deoxy adenosine। Okay, this is nucleoside। A nucleoside has a base plus sugar। These are not part of DNA RNA। DNA RNA के लिए क्या होना चाहिए? You need to have a phosphate too। So आपको वो अलग से दिखा रहा हूँ, and those are called as nucleotides। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में अलग से पूछा जाता है, what is a nucleotide, what is a nucleoside? Nucleotide is a base along with a sugar, and you will be having a phosphate। मतलब इसको ही लेते हैं, एक मिनट डिस्कनेक्ट हुआ।
कहाँ तक सुना आप लोग? ये सुना क्या आप लोग? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड तक ही सुना क्या? नहीं, वो फॉस्फेट ज्वाइन किया फिर उसके बाद का कुछ नहीं सुना। ओके ओके ओके। न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है? You have a base attached to sugar which is attached to phosphate. न्यूक्लियोसाइड में होता क्या है? ये बेस शुगर along with sugar, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड में you have base along with sugar along with phosphate. देखो, ये जो phosphate group जो भी लगा है, in this case it is attached to the fifth carbon OH. ऐसा जरूरी नहीं है, always it has to attach to the fifth carbon. As it is attached to the fifth carbon, इसमें हमने adenosine 5 monophosphate करके कुछ लिखा. It can be attached to third carbon or it can be attached to the second carbon. Okay. Then it will be called as adenosine 3 monophosphate, adenosine 2 monophosphate. Okay. And ये जो particular sugar है, this is ribose, right? So this is also called as ribonucleotide. This is a ribonucleotide. So group of ribonucleotides will make you RNA. Similarly, you can have deoxy ribonucleotide. Group of deoxyribonucleotides will make you DNA. Okay. Is this clear? हाँ। वो भी दिखाता हूँ. Give me 2 minutes. सर एक डाउट था। हाँ पूछो. वो जो ऊपर न्यूक्लियो साइड दिया है ना, हाँ. इसके ऊपर वाला, हाँ, तो फिर वो मतलब बेस अलग यूज करेंगे तो भी वो एडिनोसाइन ही कहेगा क्या? वो बेस अलग यूज किया तो एडिनोसाइन क्यों रहेगा? ये एडिनाइन से बनाया है इसलिए एडिनोसाइन बोला. गुआनोसाइन साइड यूरासिलोसाइन ऐसा कुछ नेम्स बन सकता है. एज दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम एडिनाइन, इट इज कॉल्ड एज एडिनोसाइन. ये जो पर्टिकुलर पार्ट है राइबोस शुगर, this will always be the same. If you change this, you will form different nucleosides, and they can be only finite nucleosides. क्योंकि ये पांच है, ये हमेशा यही रहेगा ribose sugar, or you can have deoxyribose sugar. So in total you can have 5 different types of nucleosides. Okay. हाँ. Either 5 and ये वाला 5 deoxynucleosides. बनाने के लिए, कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए. वो सब रहेंगे कि नहीं सिस्टम के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर, आई डोंट नो. ओके, क्लियर? सो हाँ, सर. ओवरऑल डीएनए आरएनए कैसे दिखता है? लेट मी शो यू. व्हाट इज ए डीएनए और आरएनए? इट इज combination of nucleotides and nucleosides. Nucleoside नहीं रहेगा, nucleotide. Okay. The sugar which you have is, in RNA you have ribose sugar, in DNA you have deoxyribose sugar. ये base, if it is RNA, it can be AGCU. AGCU में से कोई भी एक रहेगा. यहाँ पे OH, the phosphate which we have is phosphate diester, right? हाँ. Okay.
आ रहा है समझ में आपको क्या हो रहा है इधर? ऑक्सीजन ये कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक OH ऑक्सीजन फॉस्फेट डाइएस्टर का कंटिन्यू रहेगा। सो देखो ऑब्जर्व करो, यू आर हैविंग a sugar which is a pentose sugar. In this case it is ribose, beta D ribose. Okay, you are having a base and you are having a phosphate diester. So ये सब connected रहेगा with the help of these diester linkages. So ये जो bases है in RNA you will be having AGCU. अगर यही bases AGCT होके and the sugar which we are having is a deoxyribose, 2-deoxyribose. This is 2-deoxyribose. And the bases which we will have is AGCT. Then it will be called as DNA. Okay? हाँ And यहाँ पे जो ये hemi-acetal जो भी linkage है, the hemi-acetal linkage converted into N-acetal linkage. And acetal linkage is also called as glycosidic linkage. So ये जो linkage है, this is beta glycosidic linkage. You are not reacting that with OH, but you are reacting with that NH. Okay, क्योंकि ये nitrogen containing base में you will be having NH. That is also called as a glycosidic linkage. Beta glycosidic linkage. Okay. Okay. So different people में ये जो coding रहेगा, this coding will be different. Hence you will be having different characteristics. ये जो bases है, you can have A, G, C, मतलब random. Okay. Depending upon this coding, the characteristics will change. Is this clear? Okay. In any structure, this is RNA, this is RNA, this is DNA. The sugar phosphate will form rails. If you are taking ladder को क्या रहता है? You will be having rails and you will be having rungs. ये बीच में इसको rails बोलेंगे, इनको rungs बोलेंगे. Okay. So the sugar along with the phosphate will form the rails. The sugar along with the phosphate will form rails, and जो bases है, they act like rungs. Is this clear? हाँ हाँ. ये जो RNA जो है, it is single strand. RNA is a single strand structure, but in DNA you have two strands, or it is also called as double helical structure. RNA is single helix, but a DNA is double helix. मतलब ये जो helix है, इसके around और एक helix आके लगेगा. मतलब ऐसा एक रहा तो और एक ऐसा रहता है. सब लोग को DNA RNA DNA तो देखा होगा ना. ये एक helix हुआ. This is the second helix. Okay. A DNA has double helix structure.
as it can form hydrogen bond with the second helix. इसमें जो बेस रहेगा, इसमें जो बेस रहेगा, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है. Okay, so because of those hydrogen bonds, it is forming a double helical structure. ये बेस पेयरिंग्स भी इंपॉर्टेंट होता है. बेस पेयरिंग्स का मतलब क्या है? आई विल एक्सप्लेन. गिव मी 2 minutes. Very important. A DNA has a double helical structure because of the formation of hydrogen bonds between two helices. What are the bases which you have in DNA? You have A, G, C, T, T. right? Base pairings matlab, if in one helix you have the base as adenine, in the opposite helix, the adenine will form hydrogen bond with thymine. Okay, and the number of hydrogen bonds which are formed between adenine and thymine are 2. 2 hydrogen bonds बनता है, वो दिखाता हूँ आप लोग को. I'm taking the structure of thymine. Okay, this is connected to some sugar which is connected to phosphate. वैसे कंटिन्यू होता जाएगा. This is attached to some sugar. You have NH2. This is the hydrogen bond. इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में. Similarly, यहाँ पे NH है ना, इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में. Okay, so in one helix, if you have adenine, that will be paired with, in the opposite helix, it will be paired with thymine. ये thymine है, ये adenine है. Thymine, यहाँ पे adenine. Okay, so an adenine will always be paired with thymine with 2 hydrogen bonds. Similarly, you can have a cytosine pairing with guanine, and उन दोनों के बीच में you have 3 hydrogen bonds. Very important. They will directly ask you the number of hydrogen bonds between cytosine and guanine. कितने हैं? 3. 3. इसका भी एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं.
cytosine. यहाँ पे डबल बॉन्ड ना, no need to remember any of these structures, बस आपको दिखाने के लिए शो कर रहा हूँ. यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, this is cytosine which is attached to guanine with 3 hydrogen bonds. इनके बीच में you have 2 hydrogen bonds. इनके बीच में you have 3 hydrogen bonds. Is this clear? sir. Okay. What is a nucleic acid? A nucleic acid is polynucleotide. So question में वो लोग आपको confuse करेंगे. It is a polynucleoside. It is a polynucleotide. The answer is polynucleotide, not nucleoside. In nucleoside, you don't have a phosphate. In nucleotide, you have a phosphate. Okay? Yeah. Tell me. Hello? हाँ प्रथमेश बोलो. Everyone in the lecture? हाँ सर. Again, even in case of nucleic acids, you can have a primary structure as well as a secondary structure. In RNA, we are interested only in the primary structure. We don't say any secondary structure exists. Primary structure मतलब the base sequence. ये जो sequence रहेगा ना, this sequence will give you the primary structure of the nucleic acid. Secondary structure RNA के लिए नहीं है. In DNA, you have a secondary structure which is a double helical structure. ये जो particular helix है, it will be paired with another helix because of hydrogen bonding. And the hydrogen bonding is between adenine and thymine, cytosine and guanine. So, agar in one helix, if the sequence is A, G, A, C, then what will be the sequence in parallel helix?
अगर एक में सीक्वेंस AG है तो उसके पैरेलल हेलिक्स में सीक्वेंस क्या रहेगा? सीक्वेंस क्या है? AGAC. adenine will always be coupled with adenine will be coupled with thymine ना, so उसके पैरेलल में यहाँ पे thymine रहेगा, guanine with cytosine, adenine with thymine, cytosine with guanine. In the parallel helix the sequence will be TCTG. ये क्वेश्चन आ सकता है. Is this clear? हाँ हाँ Okay. सर. Yeah, tell me. सर वो डीएनए में ऐसा नहीं होता है कि डबल हेलिक्स? RNA में डबल हेलिक्स नहीं होता है, DNA में होता है. आरएनए में? RNA में डबल हेलिक्स जैसा नहीं होता है, मतलब डिफरेंट हेलिक्स नहीं होता है. ये जो बड़ा सा चेन है ना, समटाइम्स ये चेन दिस चेन विल रोटेट, मतलब यही से फिर से वापस आके ऐसा कुछ बनता है, बट इट इज नॉट द डबल हेलिक्स. एक ही चेन का पार्ट है वो. इसमें दीज आर टू डिफरेंट चेन्स. ये एक चेन है एंड ये एक चेन है. So this is called as double helical structure. RNA is not referred to as double helical structure. Okay. If you are considering the secondary structure of RNA, helixes are present which are only single stranded. एक ही strand रहेगा. Sometimes they can fold back to form a double helix structure. ऐसा दिखता है, but it is made up of single strand. But in DNA it is made up of two strands. समझ में आया? हाँ सर. ओके, ठीक है. कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको नोट्स में लिख के भेजता हूँ. इनके अलावा आरएनए में इट इज ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस. मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए. बस इतना ही जानना है. इनका फंक्शंस क्या है हमको नहीं पता, बायोलॉजी स्टूडेंट्स को पता होगा. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए: मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए. इज दिस क्लियर? उसके हाँ बारे में सर. नोट में लिख के भेजता हूँ. एंड ऑफ बायोमोलिक्यूल चैप्टर, एंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री.